Hello and welcome to this Facebook Live session, which we are going to be marking as an important one because, as we all know, February 4th is World Cancer Day. And I'm delighted that, like in our previous sessions, we have another expert with you here today for this week to discuss an issue which is of great concern, not just to women, but for also the girl child and for humanity as a whole. This week, we'll be discussing in great detail cervical cancers and what you can do to protect yourself or your loved ones. And I'm delighted to be joined by Dr. Kumar Rishikesh, Consultant Medical Oncology at Indraprastha Apollo Hospitals. Dr. Rishikesh, welcome to this Facebook Live session. Thank you, Dr. Karan. Uh, it's wonderful to join you here on the Facebook Live. So today on cervical cancer, and it's very important for us to discuss so that people could be aware of this issue. Absolutely. And there's no better person for the benefit of my viewers, I'd like to inform them, than Dr. Rishikesh, who has extensive experience, not just in cervical cancer, but oncology as a whole. So anything cancer, we like to reach out to him and get the most credible information for you. So let's start immediately with the most important question, and which is the most basic of all questions, Dr. Rishikesh. What is cervical cancer? Yes, to my viewers, and it's very important to understand what the cervical cancer is, and to begin with what the cervix is. So, the cervix is the lowermost part of the uterus. So, uterus is part of female genital system, and the cervix is the first part. In fact, from the beginning, from the lower part, the first part of the uterus is cervix. So it is the area which has to undergo many manipulations and many infection, because the vagina opens here, and so during the lifetime, in fact, very early into the life, our cervix gets infected by one of the very important prevalent virus, that is human papilloma virus. So this happens usually up to 90 to 95% of the women worldwide. And later on, it came to know that the cancer which develops in that area, the cervical cancer, is basically the result of this infection, this chronic infection, which persists there for long. And over the years, like in the age group of 30 plus, 40s, the cancer develops there. So there is long biological period when this actually transforms into the cancer. And cervical cancer is one of the most important cancer, especially the developing countries like India is fighting. राइट सो जैसा आपने बताया हमारे दर्शकों को कि ये एक विमेन का कैंसर है एंड इट इन्वॉल्व्स देयर जेनिटल ऑर्गन्स. इसकी आपने कुछ बात करी प्रेवलेंस के बारे में भी. हाउ प्रेवलेंट इज दिस इन इंडिया? भारत देश में जो कैंसर रजिस्ट्री है, कितने परसेंट लोग एक्चुअली या कितने नंबर्स डायग्नोज होते हैं कैंसर में, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है हमारे पास. लेकिन भारत सरकार के लगभग 27 सेंटर्स हैं इंडिया वाइड, जिसमें कैंसर की रजिस्ट्री होती है. इसको पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री कहते हैं. उस डेटा के अनुसार जो ICMR ने पब्लिश किया, उसमें विमेन में ये नंबर 1 कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर. और उसकी संख्या लगभग जो डायग्नोज हो रही है विमेन में, वो 3 से 4 लाख के बीच में पर ईयर डायग्नोज हो रही है, जिसमें से 33 के लगभग अगर हम देखें तो डेथ रेट जो है वो 30, ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख पीपल वुमेन die of cervical cancer in India. So that the burden is huge. So the disease burden is huge, prevalence and disease burden. तो आपने बताया about the human papilloma virus, वो agent है, but what is the cause of the cancer? I mean, how does the papilloma virus actually get into the woman's body? So first thing is hygiene. It's a very important thing. Hygiene of genitalism. We know that with the use of this so the sanitary napkin, sanitary pad, you would be surprised to know that in some of the area within India, the cervical cancer rate has decreased. जैसे केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंस घट रहे हैं,
That is very important and very good news for all of the part of the India to know that. And of course, this has to do with the education and of course the maximum use of sanitary pads. इसके अलावा अवेयरनेस भी बहुत तरह से हेल्प करता है क्योंकि आप अर्ली डायग्नोसिस के लिए पहुंचते हैं डॉक्टर के पास. सो होता कैसे है कैंसर, इसमें एक्सपोजर बहुत अर्ली एज में ही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जैसे मैंने कहा कि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सफाई उस एरिया की मेंटेन करना, और अगर नहीं कर पाते हैं तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है. और वो इन्फेक्शन सर्विक्स के सेल्स में घर कर जाते हैं, जो ओवर द इयर्स उसमें पहले हल्के चेंजेस आते हैं जो प्री कैंसर बोलते हैं उसको, कैंसर के पहले के लक्षण, और मोस्टली ये अननोटिस रह जाते हैं क्योंकि सिम्टम नहीं लेता. ओवर द इयर्स कई सालों के बाद वहीं पर कैंसर स्टार्ट होता है जो ग्रेजुअली यूट्रस के आसपास वाले यूट्रस को इन्वॉल्व करता है, वजाना के अपर पार्ट को इन्वॉल्व करता है, फिर किडनी से जो यूरिन निकलता है उसके रास्ते यूरेटर उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है, और सब बड़े होने पर ये बाकी दूसरे ऑर्गन जैसे लिवर, लंग्स या हड्डियों में जा सकता है. राइट, तो काफी सीवियर टाइप है ये कैंसर का. एंड व्हाट वुड यू से आर द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स इफ देयर आर our viewers, ladies or even otherwise watching, what is it that something that you would say you should look out for and seek medical advice on? Yes, very important thing to know. As I just described, that how the cancer starts from the cervix. So depending on the area it has involved, which progressed, the symptoms appear. So to begin with, or we can say that the most common symptom is bleeding from the vagina. So the bleeding may occur in women like those who have stopped having menstruation, so there should not be any vaginal bleeding, but this is called post-menopausal bleed. So those women who are already in the menopausal phase, there should not be any bleeding, but they start having the bleed. So because of that, this is called post-menopausal bleed. And in premenopausal, those who are having regular menstrual bleeding, this cycle may be altered. There may be intermenstrual bleeding between the two menstruation. There may be bleeding during the sexual intercourse. There may be, and when the disease progress a little further, there could be pain, back pain in the upper abdomen, lower abdomen, and loss of appetite, weight loss. And also very important is that the patient may present sometimes, in fact, very good number of patients present with kidney failure, because this disease when progresses, this stops the outflow tract of the kidney, that is ureter. So it blocks the ureter, kidney is not able to function properly, and because of that, the kidney goes into the failure. So these are some of the presenting symptoms, and if disease goes more advanced, it goes like in lungs or liver, then depending on the organ involved, patient may have breathing issues, patient may have jaundice, patient may have bone pain. Right. These are very presentation. Right. So very clear information there. But as you said, one telltale sign is the bleeding. लेकिन bleeding के और भी कुछ कारण हो सकते हैं. So when a patient approaches you, typically how do you work them up to come to this diagnosis? Yes. So as I told you, depending on the age group where the cervical cancer actually happens, we take first the history, the clinical history of the patient, how the bleeding episode started, how often it occurs, the amount of bleeding, all those things, and associated complaints like pain or fever or burning urine. So thereafter, general examination, and we do a pelvic examination, including the vaginal examination. During that, we try to look at the cervix directly with the help of a speculum, and if there is anything suspicious which could be related to the cervical cancer, we take the biopsy. Even if the woman has, even if we don't find any growth there, this opportunity is also used to take some sample there to test if there are cancer cells around. That is called pap smear. So we complete this examination, and if the biopsy report says yes, there is cancer or early cancer, we investigate it further with the help of imaging, that is like pelvic imaging in form of
usually contrast enhanced CT scan and better MRI of the lower abdomen. So this gives us our diagnosis and also most of the time the staging. Sometimes we have to add to find the stage like PET scan if the disease has spread further beyond the pelvis. Right. And what is the typical age range in which this cancer is found to be most prevalent in women? Yes, this is actually the cancer of plus 40, but mostly when in India, you will find that 50 plus age group is most prevalent with the cancers. And as I told you that this is because of the natural history of the disease, it infects in the young age group, but it takes long time to develop cancer. Right. So there is that age is a little bit more progressed because of the way the papillomavirus behaves. So now that we've understood what the disease is, what the symptoms are, how you stage and diagnose it, अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या अप्रोच रहता है ट्रीटमेंट के प्रति? सर्वाइकल कैंसर आपको ये जान के ये आश्चर्य होगा कि डिस्पाइट बीइंग आई मीन हम कैंसर से काफी डरते हैं और कैंसर की डायग्नोसिस अपने आप में काफी बुरी खबर होती है। तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें बहुत अच्छे से हाई क्योर रेट हम अचीव कर सकते हैं और अगर पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं उस समय वो एक्सपर्ट के पास, जो कैंसर एक्सपर्ट है उनके पास पहुंच जाए और डायग्नोसिस करें। सो अगर स्टेज 1 कैंसर है, ये अर्ली डिजीज है जो सर्विक्स को इन्वॉल्व किया हुआ है और उससे बाहर नहीं फैला है, तो मोस्टली सर्जरी से काम हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती है, फिर हम फॉलो अप करते हैं। एंड दिस इज if it is surgically resectable completely, then usually it is considered a curative surgery where आप पेशेंट की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। उसके बाद स्टेज 2 में मोस्टली जो है वो कीमो और रेडिएशन, कीमोथेरेपी साथ में पेल्विक रेडिएशन देते हैं। पेल्विक रेडिएशन में दो तरह से देते हैं, एक बाहर से जो मशीन दूर से देती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी EBRT, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्वमेंट द एरिया इन्वॉल्व ब्रेकीथेरेपी जो वेजाना के अंदर एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रेडिएशन दी जाती है। साथ में इन सब प्रक्रिया के साथ साथ कीमोथेरेपी भी चलती है जो वीकली कीमोथेरेपी देते हैं, जो जनरली 5 से 6 कीमोथेरेपी की सेशन होती है। ईच सेशन लास्ट फॉर लाइक 5 to 6 आवर्स। इस तरह से कीमोथेरेपी और रेडिएशन का कोर्स कंप्लीट होता है। उसके बाद हम 12 वीक बाद पेशेंट का फिर से स्कैन करते हैं देखने के लिए कि बीमारी कंप्लीटली चली गई है या रह गई है। अगर रह जाती है थोड़ी बहुत तो सर्जरी के द्वारा उसको भी हटा दिया जाता है। स्टेज 3 में भी मोस्टली इलाज कीमो रेडिएशन से ही होता है, बट अगर ये स्टेज 4 हो जाता है इसका मतलब बीमारी पेल्विस से थोड़ा बाहर निकल गई है या फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक रेक्टम या यूरिनरी ब्लैडर इन सब को इन्वॉल्व कर दिया है, तो हमें मोस्टली इलाज कीमोथेरेपी आजकल के टाइम में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए जो रोल जिसने चेंज किया है ट्रीटमेंट एडवांस स्टेज कैंसर के ट्रीटमेंट को, वो है टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो इन सब के थ्रू, इन सब के सहयोग से ट्रीटमेंट का रिजल्ट काफी इम्प्रूव किया है। सो हम लोग काफी इन सब चीजों पर काम कर रहे हैं और हमारे पेशेंट इससे लाभान्वित हो रहे हैं। Right, and you spoke about, touched upon this very positive side to this, that if you come early, diagnose it early, the treatment is very successful. So, if a person has come in at a good stage and you have given treatment, what is the life after surgery or after the treatment? Do people go back to their normal lives? Do they become mothers again? How does it go about? Yeah, there are certain things which we need to understand. डिपेंड करता है कि हमने कैसे ट्रीटमेंट दिया है। अगर वेरी इनिशियल स्टेज है जिसमें एक वर्ड होता है सर्विक्स के पार्ट को ही सिर्फ काटा जाता है, छोटा सा पार्ट हिस्सा ही निकाला जाता है, उसके बाद वुमेन आराम से नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मली कंसीव कर सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। डिस्पाइट डेवलपिंग कैंसर, अगर आप जल्दी प्रेजेंट करते हैं और ट्रीटमेंट सही से हो जाता है, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। दूसरी चीज है कभी कभी उससे भी छोटी सर्जरी, एक इलेक्ट्रो वायर होते हैं जिससे हम सर्विक्स के बहुत छोटे पार्ट को निकालते हैं। लीप उसको बोलते हैं LEEP।
इसके थ्रू स्मॉल पार्ट को निकालने से भी कैंसर का निदान कंप्लीटली हो जाता है अगर ये अर्ली प्रेजेंटेशन है। सो इन दोनों तरीके से अगर ट्रीटमेंट होता है तो बाद में वुमेन जो है कंसीव कर सकती है। हाँ, अगर किसी कारण से रेडिएशन जरूरत पड़ जाती है तो प्रेगनेंसी की चांस कम हो जाती है। बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि पेल्विक सर्जरी हो या पेल्विक रेडिएशन हो, सेक्सुअल लाइफ फिर भी यथावत चलती रहती है। उसमें ऐसा कोई चेंजेस बड़ा नहीं आता है जिसमें कि वुमेन को इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो। तो इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यथावत अपने लाइफ को भी कंटिन्यू कर पाते हैं। जो भी रेडिएशन के लोकल इफेक्ट होते हैं वो 3 से 4 महीने में कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं। और मोस्टली आजकल की मशीन इतनी अच्छी है, खास करके हमारे अस्पताल में एक एडवांस मशीन है जहाँ की मिनिमम साइड इफेक्ट या नहीं के बराबर साइड इफेक्ट होते हैं। सो एक रेडिएशन की जो प्रक्रिया होती है, कीमोथेरेपी की प्रक्रिया होती है, वो पेशेंट आराम से कंप्लीट करते हैं और बाद में अपने नॉर्मल लाइफ में जाते हैं। मैं अभी भी पेशेंट से मिला हूँ, आज भी एग्जामिन किया हूँ। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर, शी इज हैप्पी विथ हर सेक्सुअल लाइफ। सो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों के लिए कि कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, जो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं, और डॉक्टर ऋषिकेश इज अगेन रीइटरेटिंग दैट गेट डायग्नोज्ड अर्ली, गेट इट ट्रीटेड अर्ली, एंड यू कैन रिज्यूम your normal day-to-day life. Dr. Rishikesh, you brilliantly touched upon all aspects of cervical cancer, but no discussion can be complete without prevention. So, what is it in the hands of normal people, healthy people, to prevent cervical cancer? So yes, it's a very important thing to understand and people at large to know that this is one of the cancers which we can prevent it fully. And you understand because I have just explained in the very beginning of our talk that this is long natural history. That means from the infection to developing cancer, it takes years. So sometime around like 30 years, you can see that a kid gets infected and she develops cancer when she's in the range of age of 55 to 60. So this long gap also gives us opportunity to prevent development of cancer. So the first thing is which has successfully showed is the outcome, the result is vaccination by against the HPV, human papilloma virus. So Gardasil is one of the vaccine available. In fact, 2 vaccines are available in India, and the age group which WHO recommends to be vaccinated is 9 to 11. However, 9 to 13 is also okay, and it was seen later on that even at the age group of 17, if you take, if you give this vaccine, the prevention rate is in the range of 60 to 70%. And if you gauge in the appropriate, if you give it in the appropriate age of 9 to 11 or 12, then prevention capacity is in the range of 95%. So it is one of the cancer, because we always talk whenever there is a talk on cancer, then people ask how to prevent the cancers, because everybody wants how to prevent. कुछ ऐसा बताएं कि कैंसर हो ही नहीं। उसमें एक बहुत अच्छी चीज है एचपीवी वैक्सीनेशन, जो कम से कम एक कैंसर से आपको बचने की गारंटी देता है, वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन लगाना। इसलिए gradually you would see that government of India would also incorporate into the national immunization schedule. Of course, we are a developing country, we have financial limitations, but it is coming up. So आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। जो दूसरा चीज है, अगर कैंसर ये कीड़ा ये वायरस घर कर भी जाता है और इनिशियल प्री कैंसरस लीजन बनाने भी लगता है, तो भी अगर इसकी रेगुलर जांच की जाए, जो कि WHO या सारे डेवलप्ड कंट्रीज के एक पॉपुलेशन बेस्ड प्रोटोकॉल है कि ये होना ही होना है। एवरी 5 years यू अंडरगो टेस्टिंग, सिंपल टेस्ट, ब्रश से सैंपल लेते हैं हम सर्विक्स से, जो कि नॉर्मली जब भी वुमेन अपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक में आते हैं, वहाँ एक छोटी सी सैंपल ली जाती है, जो बहुत सस्ती टेस्ट है। इसके टेस्ट में हार्डली 300 से 500 रुपये लगते हैं आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये फ्री है। तो वहाँ पर आप ये पैप स्मीयर की जांच करा सकते हैं। पैप स्मीयर का रूटीन है कि आप इसे 5 साल में जरूर कराएं, अगर ये डीएनए टेस्टिंग के साथ होता है, जिसको एचपीवी डीएनए टेस्टिंग करते हैं। अगर एचपीवी डीएनए टेस्टिंग की सुविधा नहीं अवेलेबल है, तो
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी, वो थी एसिटिक एसिड. दिस इज वेरी सिंपल थिंग. एसिटिक एसिड वेरी चीप, 5 rupees thing. And by just putting the acetic acid in that area, it changes the color, and we can find that okay, this woman needs further testing, or we can screen out that this needs testing and this woman does not need testing. तो एक सिंपल प्रक्रिया है एसिटिक एसिड से टेस्ट करने की. सो वी आर बोलते हैं VIA. सो ये टेस्ट है. दूसरी पैपिस्मियर जो कि रूटीन पैपिस्मियर है. तीसरी, अगर आप पैपिस्मियर में डीएनए जोड़ देते हैं साथ में टेस्टिंग के लिए तो 5 साल पे, अगर सिर्फ पैपिस्मियर करते हैं तो 3 साल पे ये टेस्ट करते हैं. इस तरह से जिस वुमेन में अर्ली कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं उसे समुचित इलाज से ये बीमारी बनने के पहले ही खत्म कर दी जा सकती है. तो ये इस तरह से आप अपने को इस कैंसर से बचा सकते हैं. सो मेरा यही मैसेज है कि वैक्सीनेशन जरूर करना है अप्रोप्रिएट एज ग्रुप में, और उसके बाद रेगुलर स्क्रीनिंग एटलीस्ट एवरी 5 years HPV टेस्टिंग. आप इससे बच सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICMR स्टडी ने एक और चीज दिखाया कि अगर अपने लाइफ में वुमेन कम से कम 2 बार पैपिस्मियर करती हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 49, सो एक एज है वो आप 30 और एक लगभग 10 साल बाद और करा लेते हैं, तो भी काफी हद तक इस सुनिश्चित हो जाता है कि आप सर्वाइकल कैंसर से बच जाते हैं. और अगर ये अर्ली लक्षण प्रकट होते हैं जो प्री कैंसरस, इसको बोलते हैं कैंसर के पूर्व लक्षण, तो आपको कैंसर ना हो इसके लिए भी समुचित इलाज किया जा सकता है. Right. So, very encouraging news there that this type of cancer can be prevented and you can also detect it early. So, there are good screening mechanisms also. But Dr. Rishikesh, I have to also ask this question, which is very important, is that although COVID के दौरान हमने देखा कि वैक्सीनेशन सब लोगों ने लगवाई, शायद वो डर की वजह से था या फेथ की वजह से था, जो भी कारण था, लेकिन वैक्सीन्स के प्रति अभी भी थोड़ी बहुत एक लोगों में डाउट रहता है, झिझकते हैं. और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं बड़ी यंग गर्ल्स को वैक्सीन देने का. क्या आप दर्शकों को कुछ बताएंगे या आश्वासन देंगे कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये सेफ हैं, लॉन्ग टर्म इनके टेस्टिंग या डेटा जो है has proven them to be safe? What is your take on it? Yes. So very important part again. That let me assure you, Dr. Karan, and through you to our viewers, that these 2 vaccines which are currently in use are perfectly safe, 100% safe. There is no side effect known to the vaccine, and because of the vaccine, nobody is going to develop any medical condition. So it is widely used in the developed countries, and the same vaccine is here in India also. So I encourage you all to believe that this vaccine is completely safe, and only thing it's going to do is it is going to prevent you from developing cancer, nothing else. So please go ahead and get your girl child in the age group 9 to 12 especially vaccinated, and give her at least cervical cancer free future. Right, that's a very important message and very beautifully put, merging both science and philosophy, I think, together in that advice. Thank you for that. We are just at the end of our time on this session, and I know you have a very busy clinic as always. So my last question to you is that February 4th is World Cancer Day. What is your advice to people on how they can stay healthy and prevent cancers? So my message to the viewers is, on the occasion of the World Cancer Day, it's very important to prevent cancer. We know that prevention is always better than cure, and when it comes to cancer, you understand, if you prevent one person from developing a cancer, you do not only prevent the loss of life, you also prevent a lot of expenses and the caregivers problem also. So those who are caregiving, those who are financing their bills are also suffering. So to prevent all those happening in the future, why not prevent it from developing? So get vaccinated against cervical cancer. This is one of the cancer you can prevent yourself and your family members, your friends, your members of the society. So please get vaccinated in the appropriate age group. And second thing, the most important is please get screened with HPV, with the pap smear and HPV DNA. So if you can do these 2 things, you would be celebrating World Cancer Day in appropriate manner.
Thank you. Right. Thank you. That was Dr. Kumar Rishikesh, consultant medical oncology at Indraprastha Apollo Hospitals. If you do want to reach out to him, you want to get an appointment, the ticker below has all our contact information. You can send us a DM on our multiple digital platforms. We'll be very happy to get an appointment or an advice fixed from Dr. Rishikesh. Dr. Rishikesh, thank you so much for your time. It was wonderful talking to you. Thank you, Dr. Karan. Thanks for your Thank time. you for watching this live session on cervical cancer. Please do join us next week as we'll discuss another issue, health issue of importance. And please do share the links to this talk with others, with family members and friends, so that we can fight cancer through knowledge, awareness, and credible information. So till next time, stay happy and healthy.